व्लॉग्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था होटल को रात कैसे लगता है, एंड दिस इज़ द अर्ली मॉर्निंग इन आवर बालकनी। सो बालकनी ऐसा दिखता है, बहुत ही ठंड है एक्चुअली। तो दिस इज़ द बालकनी जहाँ से द व्यू इज़ लाइक दिस। यहाँ पे पार्किंग लॉट भी है एंड यू कैन सी द एंटायर ग्रीनरी फ्रॉम हियर। ये सब टी एस्टेट से। So actually this hotel is totally completely surrounded by tea estates and you can see the hilltop. Actually यहाँ जो parking है, यहाँ से अगर आप जाओगे तो hilltop तक you can climb, but this is only like 6:30, so it is very chilly out there. और ये हमारा रूम आप देख सकते हो, so bad actually, thrashed everything and I look very early in the morning. मैं ऐसे ही दिखती हूँ, shabby सी, and this is around 7:30, so this is how it looks, bright and shiny sunrise. तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, we are planning to go to a place, एक hill point है, तो we are planning to go there early in the morning so that the scenery should not be missed. और early in the morning ही वो अच्छा दिखता है, तो we have already got ready and this is how हमारा होटल दिखता है। जो Monarch है वो ऐसा दिखता है from the balcony of first floor. So बहुत ही बड़ा हॉल है यार, right? Just like it's like you know किंगडम का एक किंग का कोर्ट होता है, वो वैसा दिखता है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम दिस राइट एंगल। तो एक्चुअली राइट बिहाइंड मी यू कैन सी मोनार्च, और मैं मास्क पहनना आई डोंट लाइक वेयरिंग मास्क टू बी फ्रैंक, but you have to, it is a rule and in every hotels you have to do that, everywhere you go out actually आपको पहनना पड़ता है। and this is the actually breakfast area or the food area of the hotel. तो ये open kitchen सा लगता है ना, because you can sit and eat there and you can see the view also. I mean this is actually the backyard of the hotel. तो ये है पूरा लॉन एरिया जहाँ पे actually they conduct lot of activities which we missed क्योंकि इतना ठंड था, वी जस्ट वांटेड टू गो एंड कडल अप इन आवर बेड्स, इतना ठंड लग रहा था। तो यहाँ पे नाइट में एक्चुअली कैंप फायर होता है एंड यू कैन सी द चेयर्स अरेंज्ड इन अराउंड द कैंप फायर। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आके आप बैठ सकते हो। दे विल कंडक्ट सम गेम्स एंड म्यूजिक दैट एंड एवरीथिंग व्हिच वी मिस्ड एंड आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मिस कर दिया है ना इसलिए। सो दिस इज हाउ इट लुक्स द बैक सीनरी of the hotel. So you can see the hilltops there दूर, and in between there is a forest like thing, and उसके बाद tea estates है, and this is the back view of the Monarch hotel and this is the side view. एक्चुअली होटल ही इतना बड़ा है कि एटलीस्ट यू नीड अ डे टू एक्सप्लोर इट, तो विच इज़ वेरी लेस, वी हैव वेरी लेस टाइम। तो आई रादर अर्जेंट में आके सब दिखा रही हूँ। इफ़ यू रियली वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम एंड यू वांट टू सी द रियल होटल कैसा दिखता है, क्या क्या है नियर सराउंड में, तो एटलीस्ट 1 डे या 2 डे आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। सो देन यू कैन सी and see the sky, yeah, like it's literally like blue and you can make out how nice it will be to walk on a lawn. और ये है food area which is not open yet as breakfast is not served so early. तो अभी हम वहाँ पे जो अभी जा रहे हैं डेस्टिनेशन, वहाँ पे जाके आके फिर हम will take our breakfast. So this is how it is looking and this is the view of the food court. So ऐसा दिखता है and this is the reception which I really like. और ये है Christmas tree which is decorated, and actually if you see this entire hotel you can stand in one point and you can see. So ऐसा usually this is built and this is the grand hotel. और ये है हमारा लिफ्ट जो हमें ऊपर नीचे ले जाता है and you can see the Monarch
लिखा है. And hall is so big, you know, it is like middle of the hall. और आप देख सकते हो 360 डिग्री में दिखा रही हूँ. एंड दिस इज द पूल विच आई रियली मिस्ड. आई वांटेड टू डू स्विमिंग बट इतना 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 ठंड था. आई कांट इवन वॉश माई लेग्स in the cold water. What I'll go and do the swimming. तो बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा स्विमिंग पूल तो दिख रहा था बट we couldn't go for swimming, which is a very bad thing. Anyways, समर में अगर आप आओगे तो you can use it. And there is a small shop here. तो if you want to buy something like immediately आपको कुछ चाहिए just like chocolates or essential oils or sweater, caps, that is all available over there. तो ये है other side of the hotel. जो swimming pool है ना वहाँ पे you can go from this side. So this leads to swimming pool. And this is the hall. I can't say how beautiful it is. Matte पूरा है. और this is the front view of the hotel. It looks so grand, no? It is like heritage building. तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये. और है भी if you come somewhere. और ये famous इसलिए है कि this is the hotel of मिथुन चक्रवर्ती. So that is one more point to be added. और ये है side view. And actually I like the nature over here. पूरा जो nature surrounded है, it looks so yum. और ये है sun bright and shiny. अब you can make out the full green and in between it is so cold. और उसके ऊपर अभी bright shine, sunny shine आ रहा है. तो how you will feel. तो just to have that feel मैं यहाँ पे walk कर रही हूँ. And I want to show you guys also every bit of the hotel. तो इतना grand hotel है, 5-star hotel है, so at least something I have to show you. और ये है tea estate, पूरा tea estate. If you really want to have good time, no, come here, stay here for not 2 days. You can explore in between like so much greenery. And you can do good photo shoot, I can say. We didn't have time much, but मैं इधर उधर सब खड़ा होके I just took few pics. And this is their board actually, which is the place for helipad also, and it is written come and rule your kingdom. So obviously yes, because the monarch means the king, and once you enter the hotel you will feel so. And इतने रेंट पे करने के बाद obviously you have to feel that. और ये है वे टूवर्ड्स द मेन सिटी. जब हम होटल से निकलते हैं तो एक्चुअली वी आर नॉट स्टेइंग इन द मेन सिटी, एक्चुअली वी आर स्टेइंग अबोव. सो आपको ड्राइव करना पड़ेगा मेन सिटी के लिए. सो दिस इज़ वेयर इट लीड्स टू मेन सिटी. सो यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द हिल स्टेशन जो अभी हम जाने वाले हैं. एंड दिस इज द वे वी हैव टू ड्राइव थ्रू टू रीच द मेन सिटी ऑफ ऊटी. एक्चुअली लिटरली आई मिस साइकिलिंग, यू नो. अगर आपके पास टाइम हो एंड इफ यू आर स्टेइंग फॉर लॉन्ग, प्लीज ट्राई टू फाइंड सम साइकिल्स हियर. इतना अच्छा लगेगा साइकिलिंग करने में यहाँ पे. बट ऑब्वियसली इन वन नाइट आई कैंट फाइंड ऑल दैट. सो ऑब्वियसली इफ यू आर कमिंग एंड स्टेइंग समवेयर लाइक दिस प्लेसेस, ट्राई टू फाइंड सम लोकल people where they are giving or renting the cycles so you can enjoy the nature. Anyways, so this is how we are driving through the cars. So कहाँ पे जा रहे हैं ये I will show in the next video. Till then, take care. Alright, really like this sky, blue sky, green nature यहाँ पे. And really it is very cold, but it is very cozy too. तो कहाँ पे जाएंगे I will show you in the next video. Till then, take care. Bye guys. Thanks for watching.